and for some reason, Hare Krishna. All right, I hope everyone could see the slides. Wow. Oh, my camera is off. Hare Krishna. All right, I hope everyone could see the slides. Hare Krishna. Hare Krishna. So let's get started. We have been doing Shri Īśopaniṣad, and we will move on to. Hare Krishna. So let's get started. All right. Okay. Shivani is laughing, sitting next to me. So let's take the blessings of Srila Prabhupada ji, and let's do the Mangala chain, and then we shall start the new mantra, mantra 8 today. Ajnanandhasya Jnananjana-shalakaya Chakshurunmilitam yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Gurun Shri Padakamalam Shri Gurun Vaishnavam Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatha Vitam Tam Sachivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakhavitam Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchan Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Savai Devi Parmami Hari Priya Vanchakalpatarubhyascha Kirpao Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namo Vishnupadaya Krishna Preshtaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namane. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschartya Deshitarine. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Srila Prabhupada ki jai, Gurudev Maharaj ki jai, jai jai Shri Radhe Shyam. Hare Krishna, everyone. So I don't have that settings in the Zoom where I need to, so there is a setting called enable waiting room. Ooh, looks like, yeah, it has been changed. So that's the reason everybody had to wait in the waiting room, so which I didn't know because I didn't have that setting. So sorry, until I realized everybody was waiting in the waiting room. But so good to have everyone. Hare Krishna. सभी भक्तों का स्वागत है. हम श्री ईशोपनिषद में मंत्र 7 खत्म कर चुके हैं और मंत्र 8 को आज हम शुरू करेंगे. So what we have done so far is invocation mantra, Īśāvasyam principle, and then how we can live in harmony, how we will live in disharmony if we will not follow Īśāvasya principle. So these are the first 3 mantras. Then we moved on to the second part of it, which is verse 4 to 8, that how Ishwar could be understood by spiritual vision. तो हमने देखा अभी तक श्री ईशोपनिषद में किस तरीके से हम
ईशावास्य प्रिंसिपल। ईशावास्य प्रिंसिपल का मतलब है सब भगवान का, सब ईश्वर का ही है। अगर हम इस प्रिंसिपल में जीते हैं तो हम कितने खुश रह सकते हैं, ये मंत्रा 2। और अगर हम इस प्रिंसिपल में नहीं जीते तो मंत्रा 3 हमको कितने दुख मिलेंगे, जो आजकल हो रहा है। हम सेकंड पार्ट जो ईशावास्यम प्रिंसिपल से निकल के श्री ईशोपनिषद के सेकंड पार्ट में आते हैं, वर्स 4 से वर्स 8 में। उसमें हम ये समझते हैं कि किस तरीके से भगवान को समझने के लिए हमको आध्यात्मिक, हम शास्त्रों के अंदर जो वर्ड्स आते हैं वो है ज्ञान चक्षु, हाउ वी नीड स्पिरिचुअल विजन। And then further, when we get into 4 to 8, we understand that 4 to 5, that it's hard to understand Krishna from material vision, from normal intelligence, from our own logic. And we have seen this, I'm sure some of us would have definitely seen this from our own experience, that maybe our grandparents, things the way they led their life, they can't even imagine the technology, the pace it's advancing now. तो जो पीढ़ी दर पीढ़ी भौतिक संसार में जिस तरीके से टेक्नोलॉजी और बेहतर होती चली जा रही है, जिस तरीके से इम्प्रूव होती चली जा रही है, वो जनरेशन्स जो पहले की हैं उनके लिए समझ पाना बहुत ही मुश्किल है। उसी तरीके से हम क्योंकि भौतिक इंद्रियों में जीते हैं, मटेरियल सेंसेस में जीते हैं, इसलिए हमारे लिए स्पिरिचुअल वर्ल्ड को समझ पाना, स्पिरिचुअल स्क्रिप्चर्स को समझ पाना, स्पिरिचुअल ईश्वर को समझ पाना बहुत ही मुश्किल है। और उसके लिए हमको स्पिरिचुअल विजन चाहिए, और वो विजन हमको वर्स 6 to 7 में बताया कि किस तरीके से मिल सकती है। और जब ये हमें विजन मिलती है तो हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो किस तरीके से शुरू में नियोफाइट, एक कनिष्ठ भक्त की कॉन्शियसनेस होती है, और फिर मध्यम अधिकारी की कॉन्शियसनेस होती है, और फिर उत्तम अधिकारी की कॉन्शियसनेस होती है। सो फ्रॉम वर्स 6 and 7 we understood how from neophyte devotee to intermediate devotee to uttam, the most advanced, liberated, pure devotee, how this advancement and what the state of consciousness is. We observe that in from verse 6 and 7. Now moving on to 8, which is going to conclude this whole section of verse 4 to 8. And then from verse 9 onwards, we will have a new segment. So हम अब जो verse 8 करने वाले हैं, इस वर्स के अंदर हम समझेंगे कि किस तरह से हम इस श्री ईशोपनिषद के अंदर इस पूरे विभाग को, जो हम 4 to 8 वर्स को कर रहे हैं, इसको किस तरीके से हम कंक्लूड कर पाएंगे, इसका पूरा निष्कर्ष निकाल पाएंगे। So now moving on to verse 8, and I will share the mantra here, and I will share this as well. यतोर्थान् व्यदधाच्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः सपर्यगाच्छुक्रमकायमव्रणम् अस्नाविरं शुद्धमपापविद्धम् कविर्मनीषी परिभूस्वयंभूर् याथा तथ्यतोर्थान् व्यदधाच्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः अंधं तमः प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते ततो भूय. So I just thought, rather than me try to pronounce when I was listening to the pronunciation here in this video, it was so enchanting. And I've shared this link before, and maybe worth sharing it again, which is available on YouTube, Shri Īśopaniṣad, the recitation. And it's beautiful. Of course, it starts from Om Purnamada Purnamidam, and it goes until mantra 18. And some of the verses are so transcendental.
just the way the Sanskrit verse has been pronounced. So I just thought it's better if we hear the professional reciter. And the translation now for this verse, and then we will see the word-to-word translation as well. So it says, translation of mantra 8 by His Grace, His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada Ji. Such a person must factually know the greatest of all, the personality of Godhead, who is unembodied. And this is a very important word, unembodied. And in Sanskrit, we will see akayam. Kaya is the form, akaya without form. So kaya is the body, akaya is to negate. And this is the language, this is the mood of Upanishad. So it goes neti, neti, neti. So if there is a cow and we don't know how cow looks like, but we know how dog, cat, pig, they look like. So if somebody will say, oh, looking at the dog, that, oh, this is a cow. We don't know how cow looks like, but what we do know is that this is a dog, this is not a cow. So we can say it's not a cow. We don't know what cow looks like, but we do know this is a dog. तो जिस तरीके से उपनिषदों की जो भाषा होती है वो आ करके, कि संस्कृत में अगर हम किसी भी शब्द के आगे आ लगा देते हैं तो उसे निगेट कर देते हैं, तो नेति 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 की जो फिलॉसफी है वो उपनिषदों की फिलॉसफी है। उसमें कहते हैं अगर ब्राह्मण रियलाइजेशन तक पहुंचना है तो हर चीज को एनालाइज करो, ऑब्जर्व करो, रियलाइज करो और कहो कि ये नहीं है, ये नहीं है, नहीं है, इसको रियलाइज करो। तो जिस तरीके से अगर हमको ये नहीं पता कि एक गाय कैसी होती है, लेकिन हमको ये पता है एक कुत्ता, बिल्ली, भैंस, एक सूअर, ये कैसे होते हैं, तो अगर कोई हमें कुत्ता दिखा के कहे कि ये गाय है, तो हमें ये नहीं पता कि गाय कैसी है, लेकिन हमें ये पता है जो है ये कुत्ता है या ये बिल्ली है, तो हम कह सकते हैं नहीं ये गाय नहीं है। हम ये नहीं कहेंगे कि हाँ ये गाय है, क्योंकि हमें मालूम नहीं, लेकिन हमें ये मालूम है ये जो है वो गाय नहीं हो सकती, क्योंकि हमें मालूम है ये क्या है। तो ऐसी भाषा हमको उपनिषदों में बहुत मिलती है कि नहीं ये नहीं है, नहीं ये नहीं है, नहीं नहीं ये भी नहीं है, नेति नेति नेति। सो ये फिलॉसफी, ये हम जितने भी उपनिषद पढ़ते हैं मोस्टली उसके अंदर इसी तरीके से बात आती है। जैसे हमने पहले भी देखा कि भगवान दूर नहीं है, भगवान चल नहीं सकते, भगवान देख नहीं सकते, तो नेति नेति न तद भासते सूर्यो, यहाँ क्या नहीं हो सकता। और फिर बहुत कम जगह जब ये वर्णन आता है, अच्छा कहाँ है, जो पुराणों की फिलॉसफी है, जहाँ भगवान के बारे में स्पेशली भागवतम में बताया गया है, तब जब हम दोनों को कंबाइन करते हैं तो फिर हमें पता लगता है अच्छा इस तरीके से हम not narrow minded, but we have the proper context and the wider spectrum of the knowledge. And knowledge is so interesting that the mantra 9 will talk about knowledge is even more detailed. Bhagavad Gita chapter 17 also gives the different gradation of knowledge: knowledge in passion, knowledge in ignorance, knowledge in goodness. But we will see mantra 9 how it talks about knowledge, vidya. तो मंत्र 9 से हम ज्ञान के बारे में और पढ़ेंगे, विद्या के बारे में पढ़ेंगे, जो भगवद गीता चैप्टर 17 के अंदर भी है। लेकिन मंत्र 9 के अंदर हम एक उपनिषद का जो नजरिया है उसके हिसाब से विद्या क्या है, किस विद्या को ईश्वर की विद्या कहते हैं, क्योंकि हम श्री ईशोपनिषद, तो हम जो भी यहाँ पे पढ़ेंगे वो डायरेक्टली भगवान के बारे में है। बट सो बहुत ये जो वर्स है, ये वर्स मायावादियों को, अद्वैतियों को, और जो अगर मूर्ति पूजा को नीचा दिखाना चाहते हैं, उनको ये वर्स बहुत पसंद आता है, क्योंकि इस वर्स में वो कहते हैं कि साफ लिखा हुआ है आ कायम, कि मूर्ति की कुछ शरीर, कुछ बॉडी है ही नहीं ईश्वर की, ये तो साफ लिखा हुआ है। लेकिन शिला प्रभुपाद जी इसको समझाते हैं कि इसका मतलब क्या है। जिस तरीके से हम कहते हैं कि एक वर्ड का लिटरल मीनिंग होता है और एक वर्ड का भाव का मीनिंग होता है।
So a word could be a literal meaning. A word could have the bhava, the emotions, the contextual meaning. And we could see a lot of times that maybe sometimes when the kids or the partners or maybe some near and dear family members irritate us a lot, we say, you go to hell, go bang your head. So we don't literally mean, we just say, go away. Now somebody will ask, go away where? Or do you really want me to go to hell? No, that's not what the other person. The other person is just expressing angerness in this example. So it's not the literal meanings, but we need to understand the context. But how do we understand the context? We understand the context that, oh, who said it? Oh, the mother said it. To whom? To a child. Oh, has the mother always said those words? No, most of the time, or 99%, mother has always given the love and compassion. Then one time, why mother said these words? What's the context? Then we will see the context. Ah, mother didn't mean that. Just because mother was tired, the child was being naughty for a long time, mother got irritated. So she didn't literally mean that. We need to understand the emotions, the bhava behind it. And that context, that overall picture, because what we see from this verse is that 1%, that 99% of the overall picture is somewhere else in the Upanishads, in the Vedas, in the Puranas. But our acharyas, they have gone through all that and they give us the complete picture. तो जिस तरीके से हमने बात करी कि अगर एक माँ अपने बच्चे को कहे कि कई बार कहती है माँ, फादर भी हो सकते हैं, माँ अगर गुस्से में कहे अपने बच्चे को, जा मर जा, कहाँ पे है ये? मेरे सर पे है, आ मेरे सर के ऊपर बैठ जा, मेरा सर खा गया, मेरी जान खा गया। तो इसको हमको साप्ताहिक जो लिटरल मीनिंग होता है उसको नहीं लेना चाहिए कि माँ ने ऐसा क्यों कहा? इसका क्या मतलब हुआ? वाक़ई क्या ऐसा हो गया? क्या उसने सर खा लिया बच्चे ने? क्या इसका हमको समझना पड़ेगा कि इसके पीछे भाव क्या था? वो सिर्फ़ एक था, यूजुअली माँ और बच्चे में प्यार रहता है, तो उस टाइम पे ऐसा क्या हुआ? क्यों कहा? वो भाव हमको जो समझ में आएगा जब हम बाकी का भी समझ पाएँगे कि यूजुअली प्यार है और यहाँ पे किसी वजह से ऐसा कहा है। ये समझ जो है हमारे शास्त्रों की, ये हमारे आचार्य परपट के अंदर, व्याख्या के अंदर देते हैं और इसलिए व्याख्या बहुत इम्पोर्टेंट होती है। इसलिए व्याख्या हम किसकी सुनते हैं, किसकी पढ़ते हैं, इसका बहुत फ़र्क पड़ता है। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर हम भगवद गीता पढ़ें तो भगवद गीता एज़ इट इज़ जो शिला प्रभुपाद जी की है वो पढ़ें, क्योंकि शिला प्रभुपाद जी एक अकेले इंसान नहीं हैं, जिन्होंने वो ट्रांसलेशन लिखी, वो परपट लिखा। शिला प्रभुपाद जी ने हमेशा ये कहा कि मैंने आचार्यों, तो प्रभुपाद जी ने लिस्ट भी दी है कौन-कौन से 7-8 आचार्यज़ के अलग-अलग जो भाष्य थे, उन सबको मिलाकर शिला प्रभुपाद जी ने भगवद एज़ इट इज़ इंग्लिश में लिखी। तो वो शिला प्रभुपाद जी की अपनी ट्रांसलेशन, अपनी व्याख्या नहीं है। उन्होंने आचार्यों की, जो पुराने आचार्यों की एक डिसिप्लिन, डिसाइपल सक्सेशन, गुरुओं शिष्य संप्रदाय में चलती है, उसके द्वारा जो भाव निकले, उस भाव को यहाँ पे एकत्र करके उन्होंने दिया है। तो हमें ये समझना चाहिए, जो हम और इसको आगे डिस्कस करेंगे। बट हू इज़ अनएम्बॉडिड? तो ऐसा क्यों कहा गया है? Why we have said unembodied, omniscient, beyond reproach, without veins, pure and uncontaminated, the self-sufficient philosopher who has been fulfilling everyone's desire since time immemorial. So some people pick on this as well, veins. See, so the Lord doesn't have a body, Lord doesn't have veins. But so this is the literal translation. And then when we'll go further on bhakticourses.com, coming from Chaitanya Charan Prabhuji, he has dissected Srila Prabhupada ji's purport, and he has given the key Sanskrit verses and the English verses, which has been explained in the respective verses. So if we have Shri Īśopaniṣad, we will see in para 1 and 2, Kayam, what we were discussing, unembodied. And we will see each of them one by one.
ash Nevram. We will also see. So these two things are kayam, and which is unembodied and without veins. And these two are very dear to those who say that Lord, the God, the Supreme Personality of God, head doesn't have any form. They really pick on these words. So Srila Prabhupada has explained them. Sukaram, omnipresent. So Sukaram, omnipresent, Bhagwan हर जगह है. तो काफी लोग जो टेम्पल आना नहीं पसंद करते हैं वो ये कहते हैं भगवान हर जगह है, हमें टेम्पल आने की क्या जरूरत है. और आकायम हमने जिस तरीके से कहा कि जो अद्वैत के फॉलोअर्स होते हैं, जो मायावादीज होते हैं, उनको ये बहुत पसंद आता है कि ये वर्स वो हमेशा अपने डिस्कशन में पिक करते हैं. तो हमें इसका ट्रू मतलब जो है वो समझना चाहिए. Fulfiller of desires. So we can understand omnipotent, we can understand fulfiller of desires, supreme, and then Swayambhu is self-sufficient, Swayambhu. And in Brahm Samhita, Srila Prabhupada ji also gives the reference of Brahm Samhita, where beautifully Brahma ji prays to Lord Krishna, and he also used this word Swayambhu there, that there is no Lord beyond you, you are, there is no source of yours, you are the source of everyone. Shuddham, we will see the difference between antiseptic and prophylactic. So this has been explained further, and how beautifully Srila Prabhupada ji has described these words Shuddham and Viddham, Appa Pa Viddham. तो ये जो हमने देखे ये पैराग्राफ वाइज ओवरव्यू है मंत्रा 8 के परपट का, जो श्रीला प्रभुपाद जी ने अपने परपट में दिया है. तो हम पैराग्राफ फर्स्ट सेकंड देखें, सेकंड टू 4 देखें, 5 to 6, 7, 8, और 8 के अंदर ही 2 चीजें हैं, बल्कि 3 चीजें हैं. 3 संस्कृत वर्ड्स को समझाया है कि हमको इन संस्कृत वर्ड से ईश्वर की कौन सी क्वालिटीज यहाँ पे बताई है, क्योंकि श्री ईशोपनिषद में हर वर्ष में ईश्वर के बारे में बताया है. तो यहाँ पे एक और संस्कृत रेफरेंस है. ये रेफरेंस मैंने खुद अपने सामने एक दूसरे रिलीजन के लीडर को रेफरेंस करते हुए सुना कि उन्होंने इस चीज को रेफर किया और फिर कहा जो हिंदू हैं वो जो मूर्ति पूजा करते हैं वो गलत है, क्योंकि उन्हीं के शास्त्रों में ये लिखा हुआ है न तस्य प्रतिम अस्ति, कि न तस्य प्रतिम अस्ति, कि उसकी तस्यम उसकी उनकी ना not pratim, the form, the body asti is. So that Lord doesn't have a body, doesn't have any form. That's how they translate it. And that's the reason they always say that we should not do deity worship, because our own scriptures say that. And when we don't study our own scriptures, we get confused. जब हम लोगों ने अपने खुद के स्क्रिप्चर्स नहीं पढ़े होते और हमने अपने बच्चों को नहीं पढ़ाए होते, जब वो बड़े होते हैं और वो दूसरे रिलीजन के लोगों से अगर उनकी बात होती है, डिबेट होती है, जो आजकल बहुत ही नॉर्मल है. शिवानी ईयर 5 में है और स्कूल के अंदर वो रिलीजन कर रही हैं, रिलीजन का एक सब्जेक्ट है, उसके अंदर वो ये चीजें डिस्कस करती हैं. एक बुक वो पढ़ रही थी जिसके अंदर गौतम बुद्धा की फोटो थी और नीचे लॉर्ड कृष्णा लिखा हुआ था बुक के अंदर. वो पब्लिश्ड बुक है. तो अगर वो बुक स्कूल में पढ़ेंगे तो बच्चे कितने कंफ्यूज होंगे. हम समझ सकते हैं कि जो टीचर हैं उनकी खुद की लिमिट है, उनकी गलती नहीं कह सकते, क्योंकि वो टीचर कोई स्पेशलाइज नहीं है. प्राइमरी में एक ही टीचर सब पढ़ाते हैं, लेकिन क्योंकि एक करिकुलम है, रिलीजन कराना है, तो वो रिलीजन के कुछ टॉपिक शेयर करते हैं. लेकिन अगर वो टीचर क्रिश्चियन हैं, जो कि मोस्टली इस कंट्री में होते हैं, वो क्रिश्चियनिटी पे ज्यादा जोर देंगे, जो कि थोड़ा सा फेयर इनफ है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से. बट अगेन अगर बच्चों के हिसाब से देखें तो शायद सब्जेक्ट इसलिए इंट्रोड्यूस है ताकि सब रिलीजन के बारे में पता लगे. तो एज पेरेंट्स हमारी ये जिम्मेवारी है कि हम अपने बच्चों को ये चीजें क्लियर करें. इसलिए हमको थोड़ा सा समय हमेशा बच्चों के साथ में स्पिरिचुअलिटी पे बिताना चाहिए, अपने स्क्रिप्चर्स का थोड़ा सा
स्टडी जरूर करनी चाहिए, और हम इतना समय तो निकाल ही सकते हैं, चाहे आधा घंटा हो पूरे हफ्ते में, चाहे 5 मिनट हो पूरे हफ्ते में, कहीं से तो शुरुआत करनी ही चाहिए. So we should at least try a bit to discuss with our own kids. And then, of course, when we start from our own kids, then we can expand it further. So sometimes we invite here friends of our kids, and they come along, and then we discuss what it says in the scriptures. And they enjoy it because we do in an activity form. We do that in the children's class as well. Sometimes we do the role play, like Hiranyakashipu's play, and then we try to discuss that. Damodar Arti, Damodar Leela whole went recently. So we should be careful. So let's understand what Srila Prabhupada ji refers to Svetatra Upanishad 4:19. No one can grasp him above, across, or in the middle. There is no likeliness of him. His name is great glory. So this is where this na tasyam pratim asti means there is no pratima like him. Not that he doesn't have a form. There is no form like him. And we know by the examples of Bhagavad Gita. Gita is so Geet is a song, and that's the reason Gita is Bhagavad Gita, because it's a song of the Lord, and it's a poetry. That's why when we sing or we recite the verses, they come so beautifully, because all the scriptures, they've been written apart from itihasas, like actually Ramayana and Mahabharata, they also have chopais. So they're beautiful singing glories of the Lord. And the way it's been said, usually because being very poetry, it says what it's not. Like the Lord has lotus eyes. Not that Lord really have lotus instead of eyes, but this is just to express how beautiful his eyes are. So similarly, when it says that he doesn't have an ordinary form, so it doesn't say that he doesn't have a form. There is no form like his. And that's the true meaning behind it. And when we read the context as well. So nat tasya pratim asti is just one phrase, but of course it must be at least 4 lines there. So Srila Prabhupada ji has given the meaning of those 4 lines. And when we read that, then we understand it's not that he doesn't have a form. There is no form like him. That's what it interpret. So हम इस तरीके से समझते हैं कि जिस तरीके से प्रभुपाद जी ने रेफरेंस दिया है, जहां से ये लाइन आई है, कि ये पूरे वर्स का जो मतलब है वो ये है कि जब पोइट्री की तरह हमारे ग्रंथ लिखे गए हैं, तो उसके अंदर जिस तरीके से हम कहते हैं भगवान की कमल नयनी, जैसे भगवान राम के लिए भी कहते हैं कि कमल की तरह उनकी आंखें, इसी तरीके से भगवान कृष्ण के लिए भी कहते हैं लोटस फीट. तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनके भगवान राम की आंखें नहीं है, आंखें की जगह लोटस ही लगे हुए हैं, या भगवान कृष्ण के पैर लोटस ही हैं. नहीं, ये ब्यूटी है उनके बताए. ये जिस भी पोएट ने ये पोएट्री लिखी, वो उसके भाव के अंदर है कि वो इतना ब्यूटीफुल है जो भी वो देख रहे हैं. तो इसी तरीके से उन्होंने वहां पे ये लिखा है न तस्य प्रतिमा, विच मीन्स ऐसा नहीं कह रहे कि वो फॉर्म नहीं है, वो ये कह रहे हैं ऐसी कोई फॉर्म नहीं है. मतलब वो इतनी ब्यूटीफुल फॉर्म है भगवान की, जो कि बहुत अलग अलग ग्रंथों में लिखा गया है कि भगवान की जैसी कोई फॉर्म नहीं है. ब्रह्म संहिता के अंदर बहुत ही ब्यूटीफुल वर्स आता है, उसके अंदर भी यही है कि जो भगवान हैं वो हमेशा ही, if I try to find the verse, I think I have a verse here, कि भगवान हमेशा ही, भगवान सबसे पूर्ण है, भगवान से कोई पुराना नहीं है, और भगवान की तरह कोई यौवन में भी नहीं है. तो ये भगवत ब्रह्म संहिता 5:33 है. इसमें लिखा है अद्वयम, ये वर्सेस प्रिंटेड है, अद्वयम अच्युतम अनादिर अनंत रूपम. सो ये बहुत ही हम मॉर्निंग में
भगवान की जो मंगला आरती करते हैं, एक्चुअली ये गुरु पूजा के समय गाई जाती है। अनादिरच्युतम् अनादिरनन्तं रूपम् अद्वैतम् अच्युतम् अनादिरनन्तरूपम् अद्यम् अद्यम पुराण पुरुषम सबसे पुराने भगवान, नव यौवनम, लेकिन फिर भी उनका यौवन हमेशा बना हुआ है। अद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम चा इज एंड विदेशु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तौ गोविंदमादि पुरुषम तम अहम भजामि। तो इस वर्ष के अंदर भी अगर हम देखें किस तरीके से भगवान की खूबसूरती के बारे में बताया हुआ है, तो ऐसे ही हमारे ग्रंथों में, जैसे हम शुरू में कह रहे थे कि जब हम भगवान के सिर्फ एक वर्स पढ़ते हैं तो वो हमारे लिए समझना मुश्किल है, लेकिन हम जब आचार्यों की व्याख्या पढ़ते हैं तो उन्होंने अलग अलग जगह पढ़ा होता है तो उनको वो पूरा कॉन्टेक्स्ट समझ में आता है। तो यहाँ पे बलदेव विद्याभूषण, जिनकी ट्रांसलेशन को बहुत हद तक शिला प्रभुपाद जी ने भगवद गीता एज इट इज के अंदर फॉलो किया है, वो इस वर्ड्स को ट्रांसलेट करते हैं, नथिंग कैन कंपेयर विद द ट्रांसेंडेंटल फॉर्म ऑफ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। तो अगेन ऐसा नहीं है कि भगवान की फॉर्म नहीं है, लेकिन भगवान के रूप की तरह कोई और रूप नहीं है। तो ऐसा कह रहे हैं भाई वाह, भगवान का क्या रूप है, ऐसा कोई रूप नहीं है। तो कह रहे हैं ना तस्य प्रतिमस्ति, ऐसा नहीं कि आपका कोई रूप नहीं है, ऐसा कोई रूप नहीं है। तो ये वर्ड्स का भावात्मक translation है rather than literal translation. So this is how we should understand. And this could be a reason of conflict, and this could be one of the main difference between two big school of thoughts of Vedic culture, where one is Dvaita, one is Advaita. So Advaita says that there is no separate God. We are God, but we have forgotten about it. That's Advaita. Dvaita says, and then in Dvaita there are few, but Vashishta Dvaita, where Madhvacharya ji comes in, that there are two, one we, like a drop of ocean, and there is an ocean itself, who is the source of us. But we are not God, we are part and parcel of the God. So in one way, Dvaita and Advaita, they are very similar, but one of the biggest differences is this verse where it says natasya pratimasti, that Advait will say there is no separate God. If there is no separate God, there is no separate form, because we are God. But what we say that yes, God is within us in the form of super soul. भगवान हमारे ही अंदर है परमात्मा के रूप में, लेकिन वो परमात्मा का भी एक सोर्स है भगवान के रूप में, राइट? हमारे अंदर जो भगवान है वो परमात्मा के रूप में है, लेकिन वो जो भगवान है उनका भी एक रूप है और उनके जैसा कोई रूप नहीं है. So it's really important for us to understand it, and we will see the difference, how and why this is so important for us. We will see later in this verse. And then there's another beautiful Sanskrit word being used in this verse. So this verse itself is so great and detailed, and as you can understand, first Srila Prabhupada ji provided the purport, but then Chaitanya Charan Prabhu ji, he expanded the words, the Sanskrit words used in the verse even further, and that's where the philosophy comes in. That's where the disciple Guru Shishya Parampara, disciple succession comes in. इस तरीके से हम समझते हैं कि जब हम इस्कॉन या ब्रह्म गौड़िया मठ जैसे किसी भी संस्था से जुड़ते हैं, किसी संप्रदाय से जुड़ते हैं, तो हम किसी एक इंसान से नहीं जुड़ रहे हैं, हम पूरी संप्रदाय से जुड़ रहे हैं. और उस संप्रदाय का हमारे ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव होता है, क्योंकि वहां किसी एक इंसान की सोच को नहीं लिया जा रहा. बहुत सालों से गुरु परंपरा के रूप में जो ग्रंथ हैं हमारे, शास्त्र हैं हमारे, उनका अध्ययन किया जा रहा है. तो जैसे हमने पीछे वाले वर्ष में देखा कि बलदेव विद्याभूषण
जी की ट्रांसलेशन है, जिसको प्रभुपाद जी ने दिया, और प्रभुपाद जी के उस टेक्स्ट को चैतन्य चरण प्रभु जी ने दिया, और अब चैतन्य चरण प्रभु जी के उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। इसी तरीके से हम कुछ नया नहीं निकाल रहे, लेकिन वही नॉलेज जो है उसको हम और अच्छे से समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमारे वेदों में है, हमारे पुराणों में है, उपनिषदों में है, और हमारे आचार्य जैसे कि बलदेव विद्याभूषण जी, श्रील प्रभुपाद जी, और हमारे वरिष्ठ जो वैष्णव हैं जैसे कि चैतन्य चरण प्रभु जी, उसी नॉलेज को हम और अच्छे से समझने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम अपने डे टू डे दिनचर्या के अंदर उस विजडम को इम्प्लीमेंट कर सकें। सर, देन इफ देयर इज एनी क्वेश्चन, एनी कमेंट सो फार, प्लीज, अगर अभी तक किसी का कोई प्रश्न हो, किसी की कोई विचार हो, कुछ ऐसा लगे कि अभी तक जो कहा गया उसको समझना थोड़ा सा कठिन हो रहा है, चलिए, अगर नहीं, feel free anytime. The chat is there, the virtual hand is there, the YouTube live is there. If anyone at any point feel free to raise it there, and then we'll try to take it then and there straight away. Hare Krishna. So moving on, Arthapati. Arthapati, postulation in English. So Sanskrit Arthapati, postulation in English. Infer third statement that resolves two contradictory statements. तो यहाँ पे प्रभु जी बता रहे हैं कि प्रभुपाद जी ने बताया, और प्रभु जी चैतन्य चरण प्रभु जी और उसको आगे डाइसेक्ट करते हुए बता रहे हैं कि जिस तरीके से कई बार हमारे सामने दो ऐसी स्टेटमेंट आती हैं जिसे अक्सर हम कहते हैं वो एपरेंटली कॉन्ट्रोडिक्टिंग होती है, हमें ऐसा लगता है कि वो कॉन्ट्रोडिक्टिंग है, लेकिन वो कॉन्ट्रोडिक्टिंग अगर हम उसके भाव में जाएं तो हमें समझ में आता है अच्छा कहना क्या चाहते हैं। जैसे कि हमने वर्स में देखा पिछले वर्षों में, जहां पे था कि भगवान बहुत दूर भी हैं, भगवान बहुत पास भी हैं। अब हम कहेंगे ये तो कॉन्ट्रोडिक्टरी है। So if we try to understand two contradictory statements, like we have seen in previous mantras, that Lord, the Ishwar, is very far, but also very close, is not able to run, but also runs, not able to walk, but also runs. How this is possible? Two apparently contradictory. But then we need the third statement, which is the inference. And from there we can understand these two apparently contradictory statements, that how they could be true. तो जब ऐसे दो स्टेटमेंट ऐसी होती हैं जो हमें लगती हैं कि जिनके अंदर विरोधाभास है, विरोधाभास, विरोध नहीं है, विरोध का आभास होता है हमको कि अरे ये विरोध है इनमें, लेकिन होता नहीं है, हमें लगता है। फिर जब तीसरी स्टेटमेंट आती है तब हमें पता लगता है कि हाँ ये दो स्टेटमेंट दोनों ही सही है, देखने में ऐसा लगता है विरोध है लेकिन है नहीं। उसका एक एग्जाम्पल प्रभु जी ने दिया है। फॉर एग्जाम्पल, रवि डज नॉट ईट थ्रू आउट द डे, रवि's weight is increasing, so these are two. So रवि दिन में नहीं खाता लेकिन रवि का वेट बढ़ रहा है, ये दो स्टेटमेंट हैं, ये दो विरोधाभास है। अगर रवि खाता ही नहीं है तो उसका वेट कैसे बढ़ सकता है? लेकिन ऐसे के अंदर हम इन्फर करते हैं कि तीसरी स्टेटमेंट एक और होनी चाहिए, वो स्टेटमेंट होगी तो ये दोनों स्टेटमेंट सही होंगी, और वो स्टेटमेंट आचार्यों का परपट होती है, या वो स्टेटमेंट कहीं और किसी उपनिषद किसी और पुराण के अंदर होती है। इसलिए जब तक हम सबको नहीं पढ़ पाते हैं और हम अपने समय के हिसाब से, टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से नहीं पढ़ पाते हैं, इसलिए हमको चाहिए होती है परपट्स आचार्यों की और वरिष्ठ वैष्णव की, कि वो उनसे हम समझ पाएं कि ये चीज समझ में नहीं आ रही, आप प्लीज समझाएं इसको। तो रवि अगर दिन में नहीं खाते, रवि का वेट फिर भी बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है रवि रात को खाते हैं, और रवि eats secretly at night because most of the people don't eat. Maybe he openly eat in the night, but nobody knows. But most of the time people see that he doesn't eat in the day, but still weight is increasing, which means there got to be a third statement, and that is a verification. If that third statement is true, then only these two statements could be true. Then these two statements are not contradictory anymore. If this third statement is missing or this inference is missing, then
these two statements would appear to be contradictory. अगर ये तीसरी स्टेटमेंट कि रवि रात को भी खाते हैं या रात को ही खाते हैं, अगर ये मिसिंग हो तो हमको बड़ी दिक्कत होगी समझने में कि भाई रवि अगर दिन में नहीं खाते तो रवि का वेट कैसे बढ़ रहा है। तो हमारे जो शास्त्रों की नॉलेज है, एक वर्स को ही अगर हम स्टैंड अलोन लें विदाउट कॉन्टेक्स्ट तो हमारे लिए समझना बहुत मुश्किल होता है। अब अगर हम इस वर्स के लिए लें तो उसके अंदर कैसे आता है कि गॉड हैज नो फॉर्म अरूपया। तो हमने देखा जैसे कि कई जगह ऐसे मेंशन होता है, जैसे हमने देखा काया, काया बॉडी की, बॉडी नहीं है, काया नहीं है, अरूपा। तो कई जगह ऐसे कहा है कि भगवान की कोई फॉर्म नहीं है, ऐसी है हमारे उपनिषदों में। और बॉडी हैज मेनी, गॉड हैज मेनी फॉर्म्स, ऊ नॉट आ का मतलब है निगेट। सो व्हेनेवर इट सेज इन संस्कृत आ मींस नेगेटिंग, बट व्हेन इट सेज ऊ रूपaya, so that means many, plural in Sanskrit. So again these two statements are contradictory statements. तो जिस तरीके से हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा कि कैसे दो स्टेटमेंट विरोधाभास हो सकती हैं, वैसे ही हम यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से भगवान के बारे में ये दो अगर हम स्टेटमेंट्स देखें तो ये हमको कॉन्ट्रडिक्टरी लगेंगी। और हम ये सोच सकते हैं कि जो लोग हिंदुइज्म को फॉलो नहीं करते हैं, सनातन धर्म को फॉलो नहीं करते हैं और ये बताना चाहते हैं कि सनातन धर्म में जो चीजें हो रही हैं गलत हो रही हैं, वो सिर्फ इसमें से कोई एक स्टेटमेंट लेंगे और उसकी बात करेंगे क्योंकि वो उनके कॉन्टेक्स्ट से बात मैच करती है और वो उस बात को कहना चाहते हैं। लेकिन ये हमारे ऊपर है कि हम इसको किस तरीके से समझें। एंड it's not like these contradictory, apparently contradictory statements are only present in our scriptures. It's there in all the scriptures, and it's not only spiritual scriptures, it's there in material scriptures as well. Even in physics, chemistry, if we take, we will find these apparent contradictions. A lot of times when I study with kids, they also come, oh, Dad, it said it before like that, but it said it now. Then I say, what you have not studied yet, which you will study soon, which is this third statement. And understanding the third statement, the student understands both the statements. तो ऐसा नहीं है कि ये जो कॉन्ट्रडिक्टरी विरोधाभास की स्टेटमेंट्स हैं ये सिर्फ हमारे ही ग्रंथों में है या दूसरे रिलीजन के ग्रंथों में नहीं है। ये अगर हम कोई भी लिटरेचर उठाते हैं तो उसके अंदर हमको ये कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट मिल सकती हैं। अगर हम सिर्फ किसी भी लिटरेचर का एक छोटा सा पार्ट लेकर देखें या दो पार्ट लें, एक यहां से और वहां से, सिर्फ विदाउट कॉन्टेक्स्ट उन दोनों को कंपेयर करने की कोशिश करें। जैसे हमने कहा, अगर कोई सिर्फ यही देखे कि माँ ने कहा बच्चे को कि मेरी जान ले ले, तो कहेंगे ये तो दोनों के बीच में संबंध बहुत खराब है। लेकिन हमने ये नहीं देखा कि 10 साल से या 10 दिन से माँ और बच्चे साथ में थे, 9 दिन तक प्यार था, सिर्फ एक दिन में एक बार माँ ने ऐसा कहा, तो उसका मतलब यही नहीं था कि माँ ये कह रही थी कि मेरी जान ले ले। माँ बस गुस्सा अपना प्रकट करना चाहती थी। तो इसलिए हमको कॉन्टेक्स्ट देखना बहुत जरूरी है। और कॉन्टेक्स्ट हमको हमारे आचार्य ग्रंथों में कहीं और जहां रेफरेंस होता है वहां से लाके देते हैं, जो हमको अपरेंटली कॉन्ट्रोडिक्टरी स्टेटमेंट्स को समझने में हेल्प होती है। इसलिए हम देखेंगे जो नियोफाइट, जो नए भक्त होते हैं, उनको कई बार एक चीज मिल जाती है तो वो एक स्टेटमेंट उनको बहुत दुखी करती है। अरे ऐसा क्यों? अरे भगवान राम ने सीता के साथ ऐसा क्यों किया? अरे भगवान कृष्ण ने ऐसे कैसे गोपियों के कपड़े ले लिए? क्योंकि वो सिर्फ एक स्टैंड अलोन आइसोलेटेड एक इंसिडेंट को देखते हैं। लेकिन जब आचार्यों का परपट पढ़ेंगे और शास्त्रों को पढ़ेंगे तब उनको समझ में आता है, अच्छा क्योंकि गोपियों ने खुद ने भगवान को पाने के लिए इतने व्रत रखे थे, क्योंकि खुद माता सीता जो थी वो पृथ्वी की ही बेटी थी। जब हम और पूरा कॉन्टेक्स्ट लेते हैं, जब हम अपने शास्त्रों को अध्ययन करते हैं, अपने जो शिक्षा गुरु होते हैं उनसे पूछते हैं, बात करते हैं, रेफरेंसेस समझते हैं, जो तीसरा मिसिंग सेंटेंस है, व्हेन द थर्ड मिसिंग सेंटेंस
comes into picture, the rest of this above apparently contradictory statements, they get clear. So, which is Arthapati, which is postulation, which is the conclusion, which points both of them together. God has no material form, arupya. So when it says arupya, that doesn't mean that God doesn't have a form. That means God doesn't have material form. And this has been said many times. The similar, well, actually, the one I read it says that God doesn't have material form. And there are many, many more verses in Brahm Samhita which says that God doesn't have material form. And but many spiritual forms. So God doesn't have a material form, but God has many spiritual forms, and we have seen it. We have seen in Golokachar discussion that God expands himself further and further. Right? So we can understand. Ajayji. What is exactly, Hare Krishna Prabhuji, what is exactly means by material form of the God? Haribo. Very nice. Thank you so much for that, Prabhuji. Sometimes I take things for granted, and it's very very nice when you ask it. So it clarifies everyone. Material, the difference between spiritual and material. Material is something which there was a time when it was not there, and there will be a time when it will not be there, which means it's temporary. That's material. So this is material world. This body is material. The relationship is material. Husband-wife relationship is material. Once the husband is gone, the wife doesn't have any husband. That's what we say. Do you have a husband? No, he's dead. He's no husband anymore. We'll get married to someone else, a new husband. So that's material husband, right? But when we say spiritual, that means chintamani. It's the word being used in the scriptures. It's eternal. It has always been there. There was no time it was not there, and there will be no time when it will not be there. What Krishna said in chapter 2 for the soul, in Atma Jnana, the knowledge of soul, Krishna says that the soul is that there was no time. Arjun, you don't know, but I know. That comes in chapter 4 as well, 4.4. Krishna says there was no time when the soul was not there, and there is no time when the soul will not be there, right? So the soul is spiritual with that definition, but the body is material. There was a time. So I was born on 13th February 1981. So on 12th February 1981, I was not there. This body was not there. The soul must have been there somewhere. I don't know where, but the soul was there. So the soul was spiritual, but the body is material because body was born on that day. And there will be a day when this body will die, but the soul will be there. So that's what material is. When Krishna came and when Narasimha Deva came, then when the Lord and the Lord forms, when these form comes, they don't have the body they come with. That body is not a material body. They come with a spiritual body, and that's the reason we never say that they. So the Sanskrit verse is there. Yes, we call it. So, for example, we say Janmashtami. This is actually wrong because Janmashtami, Janma is birth of Krishna, but Krishna didn't take any birth. The reference is appearance and disappearance. So whenever in the Vaishnav calendar we see the birthday of any acharya, we don't say birthday or the death day. We call it as the appearance day because we know that the Lord was there before that also. It's not that the Lord was not there before it. And when Krishna comes with a spiritual body, the body itself. And again, coming from the same philosophy, many acharyas, including Srila Prabhupada, the belief is that even their bodies are not material bodies. And that's the reason, even though in Sanatan Dharma, in Hinduism, we
burn the body after death. For acharyas like Srila Prabhupada ji, we don't burn the body. And that's why we have samadhi even in Hinduism. So Srila Prabhupada ji's samadhi is there in Vrindavan. In ISKCON temple, when we enter on the left-hand side. So that's where in the world, even before Mangla Aarti, Srila Prabhupada ji's Aarti happened there in Vrindavan. That's the only place in ISKCON. So that's what that's what we mean by material body, that they come with the body, and then body is a spiritual as well. Hare Krishna. Excellent. Hare. Excellent. Thank you so much, Ajay ji, for that question. And that's such a great point. That that's the reason even in Srimad Bhagavatam, when we see that Krishna is going to wrap up. So when Krishna came down, because we asked for it, like demigods asked on our behalf, for the humankind, Krishna, please come, we need you. And then when it was a time for Krishna to go, they requested that, thank you so much, you came, you did everything you were supposed to, now you can leave to your abode. And then Krishna disappeared. Same thing with Balram. He disappeared. So disappeared means they might have gone in the water, they might have flown in the sky, or they might have, in some cases, they might have gone in the cave, meditated, and they disappeared from there. Or maybe they changed their form, but they didn't leave their body behind, like what usual material people do. So that's what material is. So thank you so much for that question. Hare Krishna. Hare Krishna. And this is a good time. We will stop here and we will resume back next week, and we will go further. But if you have time, please read through Mantra 8 and share your understanding, and even Mantra 7, the previous mantra, and we will discuss it even further. Thank you so much for everyone's presence. With that, Srila Prabhupada ki jai, Gurudev Maharaj Hare ki Krishna, jai. everybody. Jai Thank you, jai. Prabhu. Hare Krishna, Mataji. Thank you, Mataji. We pray for your speedy recovery. I hope you recover soon. We are missing you. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Hare Krishna, Ajay. Hare Hare Krishna. Now. Hare Krishna. Hare Krishna. माताओं को मेरा प्रणाम. दोनों माएं आईं, अपना आशीर्वाद दिया. बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद आपका. एक माताजी चली गई छोड़ के, दूसरी माताजी सोच रही हैं क्या करूं मैं, बोलूं कि ना बोलूं. हरि हरि बोल. हरे कृष्ण.